Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English 9. Students, today we are going to begin our very first lecture of Unit 10. And this is the SLO that we are going to cover today. This is related to grammar. Grammar से related हमारा SLO है. As you can see, it's a very comprehensive SLO. इस SLO में we are talking about parts of speech, tenses, sentence structure, other features of grammar and vocabulary to understand how language functions in different contexts, make effective choices for meaning or style while reading, listening and writing. So as you can see, it's a very comprehensive SLO of grammar from the curriculum. अब इस SLO में आपके parts of speech भी हैं, tenses भी cover होते हैं, sentence structure भी cover होता है. Now, when we are talking about tenses, we are working with verbs. And similarly, हमने verbs की types पढ़ी थी. That verbs are of different types. Main verb होता है. उसके अलावा helping verb है, auxiliary verbs हैं. उसी में आज हम discuss करेंगे modal verbs. I hope that you have a little bit idea or a very good idea about modal verbs. So, now I would like to ask any student from the Zoom class. Have you ever heard about modal verbs? Yes, modal verb is a Yes. verb and it show modality. Yes, it shows so many different scenarios. ये वो verbs हैं जो हम different situations के लिए इस्तेमाल करते हैं. Let's read the definition. Modal verbs are a category of auxiliary verbs. जब हम verb को categorize करते हैं, we know we have main verb and then we have auxiliaries or auxiliary verb. Now, auxiliary verbs के अंदर you have modal verbs. MODAL. अब modal verbs are used to express different things. They are used to express necessity, ज़रूरत, possibility, इम्कान, ability, किसी काम को करने की जो ability होती है, permission, probability or request in a sentence. So, like when we are using verbs, auxiliary verbs में आपको पता है helping verbs हैं, जिस तरह currently present के लिए हम use करते हैं is, am, are. इसी तरह we use helping verbs for the past and for the future. But what about possibilities? What about necessities? Sometimes हमें politely कोई चीज कहना पड़ जाती है, हम request करते हैं, हम इजाजत लेते हैं, हम किसी बात की श्योरिटी उसको कंफर्म करने के लिए उसके ऊपर जोर देते हैं, और इसके अलावा किसी काम हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बताते हैं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता. तो करना जो है which is a verb, but what about the possibility कि क्या ये हो सकता है या नहीं, इस तरह की situations को you cover with modal verbs. Clear? So modal verbs show you necessity, possibility, ability, permission, probability or request in a sentence. They modify the main verb in terms of the speaker's attitude or the likelihood of the action. Sometimes you are giving a command. Sometimes you are asking permission. For example, you ask permission from your teacher. You say, may I go to drink water? So, अब यहाँ पे आप student हैं. So you have to ask politely. Your attitude shows that you want to ask permission from the teacher. Is that right? Yes. So you want to you want to show respect. You want to behave like that. So when you are doing these things, you use the modal verbs and common modal verbs. Here are some very common modal verbs that we use every day, but we are not aware of that. So we use can, we use could, may, might, shall, should, will, would and must. These are most common, though there are other modal verbs as well, but they are the most commonly used modal verbs. For example, if I say, I can play that game really well. So यहाँ पे main verb क्या है? जी, from the Renaissance. Can. Main verb क्या है? Play. I can play that football. I can play that game quite well. The main verb is play.
अब इसमें आप एबिलिटी बताते हैं, मैं खेल सकता हूं, मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। तो वर्ब को आप हेल्प आउट करते हैं, मेन वर्ब जो है खेलना, प्ले, उसको आप हेल्प आउट करते हैं, उसके बारे में मजीद आप एक बात बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या ये सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या यह चीज हो सकती है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट मे रेन टुडे, आई एम नॉट श्योर, ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट माय गेस। सो इस तरह जब हम डिफरेंट सिचुएशंस को यूज करते हैं, उस सिचुएशन में रह के हम वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड मॉडल वर्ब्स। So these are the most common modal verbs. Could is used for the past ability. May is used for permission or uh, probability of something. Might, shall, should, will, as you already know. Let's talk about each one of that. So modal verbs. Here are some very important points. Modal verbs are special type of auxiliary verbs. We need to understand this. We have the big category verb, उसमें we have main verb and auxiliary verbs, और modal verbs किसमें आएगा, auxiliary verbs में। all right, they alter complete or complete the meaning of the main verb, completely meaning change हो जाएगा। For example, if I say I can play and if Lukman here says I cannot play, तो क्या ये दोनों सेम बातें हैं? Are these two the same things? No. One says, one shows the ability कि ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, और दूसरा कह रहा है कि ये नहीं कर सकता। तो meaning is changed. So it means that carefully using the modal verbs can affect the meaning of your sentence. So we need to carefully choose the correct modal verb to use for whatever we are talking about. They express ideas such as capacity, possibility, obligation. For example, you should pray 5 times a day. Obligation है ना, मैं उस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए. You should pray. You should keep yourself clean. This is obligatory. This is obligation. Or if I say, yes, you may quit the game. You may leave the class. You may go. So अब मैं permission दे रहा हूं. Yes, you can do that. I mean, I am giving you, I'm permitting you to do something. So this is why we use permission, prohibition. Prohibition क्या? मना करने के लिए, किसी चीज से रोकने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए. All right? Now, can you give me any example of prohibition? Yes. Think about it. शाबाश, सोचें. For example, if I say, you shouldn't do this, you are not allowed, it means, for example, you cannot go there. So, these are used for prohibition. We are using modal verbs for showing probability, कि यह होगा या नहीं होगा. Alright? It might be, might be not. And then, supposition, कोई चीज फर्ज करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, डिजायर करने के लिए, all these are the scenarios, basically all of them, जहां पे हम modal verbs को use करते हैं. They can also indicate the level of formality in the conversation. So if you're talking to your teacher, your senior, your language should be like that. So you have to choose the modal verbs carefully. And if you're talking to your informal gathering, if you're talking to your siblings, if you're having a conversation in your family casually, then that will vary. वो change होगा, उसमें फर्क आएगा. They do not take s for the third person singular. So if you're using third person singular, आप modal verbs के साथ s या es नहीं लगा सकते. क्या आप पहले verb के साथ s और es use करते थे? बिल्कुल. Play, plays, हम यूज करते थे ना थर्ड वर्ब के लिए, एस को
ऐड करते थे या es को ऐड करते थे अकॉर्डिंगली, बट हम यहां पे मॉडल वर्ब्स में ses बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. Here are some main modal verbs. Can, for example, please zoom in. Yes, I can do that easily. Could, I could go there on time. कि मैं वहां पे वक्त पे जा सकता था. May, you can make, you can say, you can make interrogative sentences as well. May I go to have a break? तो यहां पे आप permission ले रहे हैं. That's why you are using the modal verb may. You're not saying can I go to, can I go outside? Can का मतलब है आप जा सकते हैं. This is your ability. But you have to ask permission. तो आप कहेंगे may I go. ठीक है, क्योंकि आप permission ले रहे हैं. जा तो आप सकते हैं. You can go, you have the ability, आपके पास वो ताकत है जाने की. लेकिन हमने मकसद क्या है हमारा? पूछना मकसद है. क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? This is for taking permission. Might, all right. What do you mean by might? Might is another way of saying may, but in the past. All right. Must. Must किसके लिए आता है? You must do that. You must not go there. जरूरत को show जरूरत. करने के लिए Yes. No, this is not zarurat. This is actually a very much more than zarurat, much more than necessity. ठीक है? Prohibit करना. You must do that on time. इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए बहुत Yes. इम्पोर्टेंट है. Must, आपको ये करना चाहिए. You must do that. ठीक है? तो must is more than should. जैसे हम कहते हैं you should be on time. इसका क्या मतलब है? तुम्हें वक्त पर आना चाहिए. बट जब हम कहते हैं you must be on time, it means it is very important that you must be on time. इसके ऊपर जोर दिया गया है. इसी तरह shall, another way of will. Will is definite. Will में assurity होती है. It's like a promise. But shall is okay, it will be 50-50. I shall go tomorrow. इसमें chances हैं आप जाएं या ना जाएं. जब आप कहते हैं I will go tomorrow, तो इसका मतलब है you are determined. आपका पुख्ता इरादा है. ठीक है? You have a determination. You have the final, you have made the call. Finally. So, should, ought to. Should or ought to, they are working like the same, in the same way. Ought to is another way of saying should. And would. Would is the past form of will. Alright, तो ये past के लिए. तो कुछ modal verbs present के लिए हैं, कुछ past के लिए हैं और future के लिए होते हैं. Here are some more modal verbs on the screen. Can, cannot. They are the opposite. Ability को show करते हैं ना. They are showing the ability. This is for positivity. This is for yes. And this is that I cannot go. This is for negation. इसी तरह may not, could not. You can see that modal verbs are also in pair. एक कहता है positive को यानी करने को, एक उसके साथ not जब लगा देते हैं, that means negation, यानी वो नहीं करना. तो must not, could not, shall not, should not, will not, would not, might not, could not. So all these are your modal verbs with their negative forms as well. And there are more modal verbs. All right. Let's talk about can first. Can is the most common modal verb. All right. Can you give me any sentence with using can? Ji, shabash, soche. You can do it. You can do Yes. it. You can do this. You can pass the test. It means ability को बता रहे हैं कि तुम कर सकते हो. तुम्हारे पास ability है. You cannot go there. तुम वहां नहीं जा सकते. You are not able to go there. ठीक है? So one of the most commonly used modals or modal verbs in English is can. It can express ideas such as capacity, permission or request. Request के लिए भी आप कर सकते हैं.
कैन यू लेंड मी योर मोबाइल फोन, इसके लिए भी आप कैन यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए भी, कैपेसिटी को बताने के लिए भी कि वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है. Let's look at some examples. Here, number one is she can speak French. What is the main verb? Speak. This is the main verb. And can is auxiliary. And we know this is she can speak French. इसका मतलब है वो French बोल सकती है. She has the ability, the capacity to speak French. So it means that this is telling us the whole power of the main verb कि ये हो सकता है. अगर हम कहें she cannot speak French, again this is also showing a capacity कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती. ठीक है. Next one is, now this here we used can for showing the capacity of doing something. Next up we can use for permission. He can come in now. वो अब अंदर आ सकता है, यानी उसको इजाजत है. तो यहां पे can is used for permission. All right. What will be the opposite? He cannot come in now. वो अब इस वक्त नहीं आ सकता, वो इस वक्त अंदर नहीं आ सकता. So उसको परमिशन नहीं है. So अगर आप उसके साथ not लगाएंगे that will be in the negation, और अगर आप उसको ऐसे ही यूज करेंगे so इसका मतलब है you are allowing, you are giving permission. Next, this is for request. Can you lend me your pen please? क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो? तो क्या है, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है. तो यहां पे रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. नाउ गिव मी वन सेंटेंस ऑफ दीज थ्री वन बाय वन. शाबाश. गिव वन एग्जांपल ऑफ कैपेसिटी. जी. She can cook biryani. She can cook biryani. That's a very delicious example, by the way. Okay. She can cook biryani. और इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आप? गिव मी अनदर एग्जांपल. She cannot cook biryani. यस. शी कैन नॉट, या उसका कॉन्ट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं can't. ऑलराइट. शी कैन डू दैट, शी कैन डू दैट. तो ये क्या है? दिस इज फॉर कैपेसिटी. क्या कैपेसिटी क्या होती है? काम को करने की क्या है? वो उसके अंदर मार्जिन है, कैपेसिटी है इतनी कि नहीं, मतलब हो सकता है काम या नहीं हो सकता. ओके. नेक्स्ट आप quickly think about the one with permission. Give me a very different sentence. जी. He can take the bus. All right. Okay. So he can come tomorrow at 8. वो कल 8 बजे आ सकता है. ठीक है. This is for permission. इसी तरह can you lend me your pen? Can you pass the salt? Can you pass me the sugar? So ये आप permission के लिए, जैसे आप किसी से ये आप request के लिए, क्या आप politely कहते हैं कि मेरा ये काम कर दोगे? Can you turn on the fan please? Okay. So these are, so can be used for capacity, permission and request. You must note this. All right. Okay. What about could? Could express the possibility, the past ability as well as suggestions. किन तीन कामों के लिए could को हम यूज कर सकते हैं? Possibility, क्या ये काम पॉसिबल है, हो सकता है, मुमकिन है या नहीं. ठीक है. Past ability, जिस तरह can को हम प्रेजेंट में ability के लिए यूज कर सकते थे, इसी तरह हम past को could को हम यूज करेंगे for past ability. And also the third thing is suggestions, मशवरा देने के लिए, suggest करने के लिए, and also for requests. Okay, let's see how it works. Now let's look at the examples. Extreme rain could cause the river to flood the city.
दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ज्यादा बारिश होगी, एक्सट्रीम बहुत शदीद बारिश होगी, तो क्या होगा, सैलाब आने का की पॉसिबिलिटी है, सैलाब आ सकता है, यानी मुमकिन है कि सैलाब आ जाए. सो एक्सट्रीम रेन से क्या होगा, could cause the river to flood the city. This is a possibility. ऐसा हो सकता है. ठीक है. Now, next example is John could run very fast when he was younger. अब ये भागने की उसकी एबिलिटी है. ये जब पास्ट में जब वो यंग था तब वो बहुत तेज भाग सकता था, तब उसके पास ये एबिलिटी थी, ये सलाहियत थी. अब नहीं है. तो क्योंकि पहले थी अब नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कुड यूज करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट एबिलिटी. ठीक है. सो लेट्स हियर वन मोर एग्जांपल फ्रॉम मुबीहा. इज मुबीहा देयर? जी. Yes, sir. Yes. Can you come up with the first example? A very different example from possibility. G. Her carelessness could uh, cause her to fail the exam. ठीक है, अगर वो careless है तो possibility है that she will fail the exam. So this is a possibility. All right. इसी तरह next up, past ability. If you say I could eat the whole biryani in like a minute, तो ये past ability मैं बता रहा हूँ. ठीक है, something that I could do in the past, not today. So this is also for past ability. So the task is to come up with as many examples as you can for each of these modal verbs. Okay, only then you can differentiate between these. Now let's look at for suggestions. हमने क्या बात की थी? Could is used for possibility, past ability, suggestion and request. So suggestion, we could go to an ice cream parlor or stay home and watch a movie. एक suggestion है क्या कि हम ये भी कर सकते थे, या घर रहें और कोई फिल्म देखें, या घर रहें या कुछ और काम करें. तो ये suggestion है. We could go to an ice cream parlor or stay at home and watch a movie. एक suggestion है, एक मशवरा है. ठीक है. We could attend the class or go to the seminar. क्या हम क्लास अटेंड कर सकते थे या सेमिनार जा सकते थे. तो this is for the past suggestion. Now, could I use your cell phone for a moment? जैसे हम can को request के लिए इस्तेमाल करते थे, इसी तरह could को भी हम request करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये past के लिए. Could I use your cell phone for a moment? ठीक है. So this is for request. Could I get 10 rupees? So many different requests. Okay. Could I get the notes that you took yesterday? So you can get so many different examples. Now let's talk about may. Now this is not the name of the month. This is actually our modal verb. Let's see. It is most commonly used to express possibility. It can also be used to give or ask for permission. ये mostly हम permission के लिए use करते हैं, possibility के लिए भी. You can see that most of the modal verbs are using the same words. जैसे can भी possibility के लिए, may भी possibility के लिए, तो आप use कर सकते हैं. Maria may be at school or at home. अब देखें, हम sure नहीं है Maria के बारे में. Predicate है, this is the subject, this is the predicate. Now, we are not sure. मुमकिन है वो घर में हो, मुमकिन है वो स्कूल में हो. So we are not sure. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? We will use the modal verb may. Maria may be at school or at home because I am not sure. Okay. Next up, may he leave the room with me? This is for permission. May I go to have a glass of water? May I go to the washroom?
May I use my cell phone? So this is for permission. Always, and it is very formal. ये आप formal setting में और classroom में use करते हैं. Yes, he may leave the room with you. अब ये है permission मांगने के लिए, asking for permission. और may को आप permission देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी दोनों के लिए, परमिशन हासिल करने के लिए, इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी आप may मॉडल वर्ब यूज करते हैं. Yes, he may leave the room with you. This is for giving permission. All right. Okay. So, lot of model verbs are left. We will cover in the next lecture. So, आज हमने basic model verbs को cover किया है. Your task is to come up with as many sentences as you can. Now, in the book, you have to identify these 12 model verbs in the following sentences. First one is, my teacher speak 4 languages. क्या लगता है आपको? What is the right? Yes, can. Okay. अगर मैं कहूं my teacher must speak 4 languages, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कि वो बोलती है. Must. मैं कह रहा हूं कि मेरी टीचर को जरूरी है कि वो 4 लैंग्वेजेस बोले. Who am I to say that? Right? No, sir. Can I say my teacher must speak 4 languages? मतलब मैं obligation लगा रहा हूं कि उनको 4 लैंग्वेजेस ही बोलनी चाहिए. तो अगर आप गलत मॉडल वर्ब को सिलेक्ट करते हैं तो मतलब पूरा चेंज हो जाएगा. ऐसे ही है. The whole thing will be totally changed. Okay. Next one, quickly. I use your mobile to call my mother. May. Yes, may. This is for permission. You are asking permission. Next, you must or could not speak loudly in the hospital. Must. Yes. अब ये obligation है कि तुम्हें बिल्कुल prohibition है ये. This is actually आप prohibit कर रहे हैं. This is prohibition. मना किया गया है, ममनू है कि आप हॉस्पिटल में ऊंची आवाज में बात करें. We are going to cover these two now and you will do these rest of them by yourself. I could or must use a little help in packing all these clothes. Ji. What is the right answer? Could. Yes, could. कि मैं help ले सकता था इन सारे कपड़ों को पैक करने के लिए मैं help ले सकता था. This is for past ability. And finally, madam, could or may you repeat what you said? Could. Yes. Okay. Madam, could you repeat what you said? क्या आप दोबारा कह सकती हैं जो आपने कहा? This is also for ability. Shabash. Now, I hope that the concept is clear between all these modal verbs over here, and you can use and you can solve these rest of them from the book and also by the PPT. Okay, a little quiz. Shabash, quickly. Let's see who will answer this first. This dress suits her style. She definitely like it. What is the right answer? May. अगर हम कहेंगे may तो होता है 50-50. Definitely. ये देखें definitely word है. Can. Could. सोचें जरा. Could, sir. Sir, could. This dress suits her style. She can definitely like it. वो इसको पसंद करती है. पसंद जरूर कर सकती है. ये तो possibility है. ये तो ability बता रहे हैं. Could is for past ability. So, what do you think? Think out of the box. क्या आंसर हो सकता है? Will. Yes. Will is also a modal verb. This dress suits her style. ये ड्रेस उसके स्टाइल को बिल्कुल सूट कर रहा है. वो इसको जरूर पसंद करेगी. वो इसको जरूर पसंद करेगी. So it means will is the right answer. If you use any other modal verb, the whole thing will be changed. Look at the word definitely. हम बिल्कुल श्योर हैं. Definitely का क्या मतलब है? यकीनन, लाजमी. तो will is the right answer because will is used for showing a complete determination.
Okay, let's see. Choose the correct modal verbs. I think I have failed the test, but I'm not sure. shall might देखिए टेंस कौन सा है? future देखें, सर I shall think आएगा I might have failed the test, but I'm not sure. देखें ना, हम sure नहीं है, 50-50 है, तो may और might, you know ना, this may, yes sir might is correct might, yes. Look for possibility. Situation को समझना है आपने. Next up is we have to rush. हमें जल्दी करना होगा, जल्दी करना होगी. We blank missed the last bus home. जी. not हमें जल्दी करनी होगी. We missed the bus last home. Missed the last bus home. जी. must not yes sir must not is correct जी. हमें जल्दी करनी होगी. हम बिल्कुल भी जो आखिरी बस घर जा रही है हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, मिस नहीं कर सकते. ठीक है? So this is for showing emphasis, necessity कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, otherwise we will miss the bus. So this is the purpose of these modal verbs. If you had let me know earlier, अगर तुम मुझे पहले बता देते, I would have been able to come. मैं आ सकता. ठीक है? I would have been able to come. तो मैं आ सकता. Will की past form would हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि हम past के बारे में बात कर रहे हैं. और आप बाकी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं डियर लर्नर्स वो आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम द बुक. अ वर्कशीट इज अटैच्ड वेयर यू विल बी टेस्टेड विद ऑल द अदर मॉडल वर्ब्स. रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडल वर्ब्स, बट सबसे पहले हमें जो बेसिक मॉडल वर्ब्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल सीखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में या किसी भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी में जब हम उसको देखें तो हम करेक्टली उसे rightly यूज कर सकें. सो कैन, कुड, शुड नॉट, शैल, विल, इन सब में आप डिफरेंस क्लियरली चेक करेंगे और डिफरेंसेस अच्छे तरीके से लर्न करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें और आप फिर क्लियरली देखेंगे कि विल और शैल में क्या फर्क है, कुड और कैन में क्या फर्क है, मस्ट और माइट, मे और माइट आप कहां पे करेक्टली यूज करेंगे. ठीक है? This is all about today's lecture of modal verbs. We will do the second part of this lecture in the tomorrow's lecture inshallah. जी. excuse me sir आप कौन सा लेक्चर होगा This is the last lecture. Chemistry. अब chemistry का आपका lecture होगा. ठीक है? क्या लेक्चर की रूटीन चेंज हुई है फर्स्ट लेक्चर भी बायो का था No, actually, if a lecture is not happened in between, अगर teacher या कोई भी reason से lecture अगर skip होता है तो वो फिर timing जो है वो थोड़ी सी alter हो जाती है. ठीक है? Take care of yourselves. Allah Hafiz.